Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktivedanta. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktivedanta. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhaktivedanta. Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. To learn how to keep the beat properly. You know, I had to stop the recording, I had to erase the recording, I had to start it over again. That's why I'm chanting Jaya Jaya Sri Caitanya again, because you people can't get it together to keep the beat. You want to chant Jaya Jaya Sri Caitanya Jaya Nityananda. That's not how I was chanting. Jiv Jago, that's not how I was chanting. Who's it? You translate? Of course, these guys, they know how to speak English. I mean, the ones here that can't keep the beat, they know how to speak English. He wasn't here, so he's not at fault. No, I'm serious. Learn how to keep the beat. You couldn't hear, obviously. I'm a musician, you aren't. That's the problem. You know, I was going like this with my hand even, and you're still going, and it a completely different speed. Come on, give me a break. You obviously couldn't hear that you were going at a different speed to me. You could hear? You weren't here. You weren't here, you were in outer space. You could hear that I was going at a different speed than everybody else? No, you were also in outer space. The point is that we cannot become big Krishna conscious by flying in outer space. Translate. तो महाराज कह रहे हैं कि सब भक्तों से कह रहे हैं कि जो ताल सही नहीं सब बजा रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी. This is yoga. महाराज तेज कर रहे थे, भक्त लोग आस्ते कर रहे थे. Yoga means attentiveness. Talk, come on. इसलिए महाराज कह रहे थे इसलिए ताल साधना जरूरी है. Translator is floating in outer space. Huh? The translator is floating in outer space. Everybody got out of the wrong side of bed today? तो इसलिए महाराज कहते हैं कि महाराज के साथ ताल बनाना जरूरी है और मतलब ध्यान रखना जरूरी है. योग एकाग्र ध्यान. We're reading today from Sri Caitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 9, text starting with text 222. तो मध्य लीला अध्याय 9 में से 222 प्यार श्लोक से हम पाठ कर रहे हैं. This is the chapter entitled Lord Chaitanya's Travels to Holy Places. तो इसका शीर्षक है इस अध्याय का श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्रा है. What's on the board? 222 or 223? 223. Huh? 223. So I'll chant text 222. Chamtapure ase deki Sri Rama Lakshmana Sri Vaikunthe ase Kaila Vishnu Darshanam. Because Darshana, because he's just gone to a temple of Lord Vishnu. तो यहाँ पर दर्शन शब्द लिखा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु विष्णु जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए. Translation of 222. Later the Lord went to Champatapura, where he saw the deities of Lord Ramachandra and Lakshman. बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु चंपापुर गए जहाँ उन्होंने श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण के 8 विग्रहों के दर्शन किए. He then went to Sri Vaikuntha and saw the temple of Lord Vishnu there. इसके बाद वे श्री वैकुंठ गए और वहाँ भगवान विष्णु का मंदिर देखा. So let us say the Guru Pranams, please. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Prabhupada Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Vacha
Gina Timirindasya Chakshurunmilitam Gina Tasmai Shri Gurave Sri Caitanya Mahaprabhu Stapitam Yena Bhutale Vandeham Shri Guru Shri Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Sarvan Raghunatham Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shikanatamscha Hare Krishna Karuna Sindhu Dandu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Virinda Vanishwari Krishavanu Sutta Devi Pranamami Hari Puri Pancha Kapa Kribascha Kribas Sindhu Bevacha Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again. Later the Lord went to Champatapura, where he saw the deities of Lord Ramachandra and Lakshman. He then went to Sri Vaikuntha and saw the temple of Lord Vishnu there. So Prabhupada's purport. Champatapura, sometimes called Chinagur, is located in the state of Kerala, and a temple of Lord Ramachandra and Lakshman is located there. कभी-कभी चांपटापुर को चेंगलूर भी कहा जाता है। ये केरल रियासत में स्थित है। यहाँ भगवान रामचंद्र तथा लक्ष्मण का एक मंदिर है। Sri Vaikuntha, about 4 miles north of Alvar, Tirunagarai, and the 16 miles southwest of Tirunelveli, is situated on the bank of the Tamraparni River. श्री वैकुंठ ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित है और अलवर तिरुनगरई से लगभग 4 मील उत्तर तथा तिरुनेलवेली से 16 मील दक्षिण पूर्व में। So, Mahaprabhu's tour of South India was very comprehensive, and so he was playing the role at this time of Acharya. He was going to all these temples honoring the Supreme Personality of Godhead. He also went to temples of Lord Vishnu, of Lord Shiva. We mentioned earlier that sometimes when he went to temples of Lord Shiva, he converted the Shaivites to Vaishnavism. We have discussed previously that although followers of Lord Shiva are supposed to understand the relationship between Lord Shiva and Lord Vishnu, generally their priests do not know the relationship properly. That's especially true today. It's especially true today that the priests cannot explain. So only a pure Vaishnava can properly explain the relationship between Lord Vishnu and Lord Shiva. So converting the Shaivites to Vaishnavas means that he gave them the proper understanding of the relationship of Lord Shiva and Lord Vishnu. And of course, he engaged them in the process of
Harinam Sankirtan. और उनको हरिनाम संकीर्तन के बीच में उनको सम्मिलित किया, उनको हरिनाम संकीर्तन में उनको लगाया। So it's hard to imagine how much Vaishnavas in general has been eroded in these areas where Mahaprabhu was touring. तो अभी सोचना बहुत मुश्किल है कि कैसे जो वैष्णव धर्म जो है काफी रूप से लुप्त हो गया इस सब स्थानों में, जब चित्र महाप्रभु ने परिक्रमा किया था, दर्शन के लिए यात्रा की थी। Because now we see that Christianity is spreading like wildfire in all these areas that Mahaprabhu went to. और हम देख सकते हैं जो ईसाई धर्म है वो दावनी के समान जो है ये सब जगहों पर फैल चुका है, जिस स्थान पर चित्र महाप्रभु तीर्थ यात्रा में गए थे। It underscores the urgency of our Krishna consciousness movement. इसलिए वो जो हमारे कृष्णा भावनामृत आंदोलन के प्रचार का जो If it were not for Srila Prabhupada, Vaishnavism in India would be almost lost. It has happened previously, where Vaishnavism was almost lost. अगर श्रील प्रभुपाद जी नहीं होते तो भारत में भी जो वैष्णव धर्म है वो अधिकांश लुप्त हो जाता। Now try to understand that if it weren't for Srila Prabhupada, it would be lost again. तो श्रील प्रभुपाद जी ना होते तो ये दोबारा चुप हो जाता। Because at the time, we could say as recently as the time of Srila Bhaktivedanta Thakur, there weren't any pure Vaishnavas. तो श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर के समय तक शुद्ध दर्शन ढूंढना बहुत मुश्किल था। If you read in the biography of Bhaktivedanta Thakur, called the Seventh Goswami, तो अगर हम बायोग्राफी पढ़े श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी की, जिनका नाम सप्तम गोस्वामी है, you'll see that his time, the Vaishnavas, followers of Mahaprabhu, had all become degraded, Sahajas and other deviant sects. And so the opinion of Vaishnavas was very, very low because there were no pure devotees. तो हम उनकी बायोग्राफी में पढ़ते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे, वो काफी हद तक सहज्या बन चुके थे, इसलिए लोगों की भावना वैष्णव धर्म के प्रति बहुत निकृष्ट हो गई थी। So after Bhaktivedanta Thakur left Jagannath Puri and went to Navadvip Dham, at that time he had his home at Gojruma Dham. जब भक्तिवेदांत ठाकुर ने जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर नवद्वीप धाम में गए, Jai Jai Shri Radha and Krishna Balam. And at his home he had this little club of pure Vaishnavas, Jagannath Das Babaji and Gorkashore Das Babaji. They used to have their own private sangha there. तो नवद्वीप धाम में उनका घर था, वहाँ पर उनका एक छोटा सा भक्तों का एक समूह था जिसमें श्री रघुनाथ दास बाबूजी महाराज थे, श्री गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज थे। So practically speaking, they were almost the only pure Vaishnavas. और व्यवहारिक रूप से देखें कि उस जगह में वही कुछ गिने-चुने शुद्ध वैष्णव बच गए थे। So then we see how Srila Bhaktivedanta Thakur saved Vaishnavism. हमने देखा कैसे श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर ने शुरुआत की वैष्णव धर्म को बचाने की। Similarly, Srila Prabhupada is present tense, saving Vaishnavism from total obliteration. और श्रील प्रभुपाद जी आज भी वैष्णव धर्म की रक्षा कर रहे हैं लुप्त होने से, पूर्ण रूप से लुप्त होने से। The Sri Vaishnavas were basically the foremost religion in South Indian areas that Mahaprabhu was visiting. और जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की तीर्थ यात्राओं में थे तो श्री वैष्णव जो है वो सबसे ज्यादा प्रचलित थे। But unfortunately, when you tour South India now, you'll see that there are hundreds more Christian churches than so-called Hindu temples. लेकिन अगर आप अभी उसी जगहों पर यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे आपको कई जो चर्च है, Text 223. ज़्यादा मिलेंगे मंदिरों की जगह। Malaya Parvate Kaila Agastya Vandana Kanyakumari Dahan Kaila Darashana Malaya Parvate Kaila Agastya
Vandana Kanyakumari Tahan Kaila Darashana Malaya Parvate Kaila Agastya Vandana Kanyakumari Tahan Kaila Darashana Malaya Parvate Kaila Agastya Vandana Kanyakumari Tahan Kaila Darashana. Next. Louder. Tahan Kaila Darashana. Come on. Louder. Kanyakumari Tahan Kaila Darashana. Malaya Parvate Kaila Agastya Vandana Kanyakumari Tahan Kaila Darashana Malaya Parvate Kaila Agastya Vandana Malaya Parvate Kaila Agastya Vandana Kanyakumari Tahan Kaila Darashana Malaya Kumari Tahan Kaila Vaishnavis. Vaishnavis. Kanyakumari Tahan Kaila Darashana Kumari Tahan Kaila Darashana माधुरी जी दादा ने जोर से उच्चारण करें और जोर से गाएं Radha Nagastya Vandana Tahan Kaila Darashana Malaya Parvate Kaila Agastya Vandana Kanyakumari Tahan Kaila Vandana Malaya Parvate Kaila Agastya Vandana Kanyakumari Tahan. Translation. Sri Caitanya Mahaprabhu then went to Malaya Parvata and offered prayers to Agastya Muni. इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु मलय पर्वत गए और उन्होंने अगस्त्य मुनि की वंदना की He then visited Kanyakumari or Cape Comorin. तत्पश्चात उन्होंने कन्याकुमारी केप कैमरिन नामक स्थान की मुलाकात ली Prabhupada Sri Prabhupada Ki Jai. The range of mountains
in South India, beginning at Kerala and extending to Cape Comorin, is called Malaya Parvata. दक्षिण भारत में वह पर्वतों की माला जो केरल से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है मलय पर्वत कहलाती है. Concerning Agastya, there are 4 opinions. Number 1, there is a temple of Agastya Muni in the village of Agastya Pamali. अगस्त्य के संबंध में 4 प्रकार के मत हैं. पहला, तंजौर जिले में अगस्त्य पल्ली नामक गांव में अगस्त्य मुनि का मंदिर है. In the district of Tanjore. तंजौर जिले में. Number 2, there is a temple of Lord Skanda on a hill known as Shivagiri. शिवगिरी नामक पर्वत पर भगवान स्कंद का मंदिर है. And this temple is said to have been established by Agastya Muni. जिसकी स्थापना अगस्त्य मुनि द्वारा की गई जाती है. Number 3, some say that the hill named Cape Comorin, a hill near Cape Comorin, is known as Pathia. लोग कहते हैं कि कन्याकुमारी के पास पठिया नामक पर्वत है. That this hill served as Agastya Muni's residence. जहां अगस्त्य मुनि रहते थे. The 4th opinion, there is a place known as Agastya Malaya, which is a range of hills on both sides of the Tamarapani River. अगस्त्य मल्य नामक एक अन्य स्थान भी है जो ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों में फैली हुई एक पर्वतमाला है. Cape Comorin itself is also known as Kanyakumari. ये कन्याकुमारी भी कहलाता है. So, Srila Prabhupada has explained everything in the purport. I'm simply going to go on to text 224. श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में सब कुछ समझाया है, इसलिए मैं अगले अध्याय 224 में जाता हूँ. Amritaya Deki Sri Rama Gorahari Malara Deshete Aila Yata Bhattatari. After visiting Kanyakumari, Sri Caitanya Mahaprabhu came to Amritala, where he saw the deity of Sri Ramachandra. कन्याकुमारी देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अमृतल आए जहां उन्होंने श्री रामचंद्र के 8 लीलों का दर्शन किया. Thereafter he went to a place known as Manaradesha, where a community of Bhattataris lived. तत्पश्चात वे मल्लार देश गए जहां भट्टथारी जाति के लोग रहते थे. So we see from this description of the tour of Chaitanya Mahaprabhu how prominent the places of pilgrimage of Sri Ramachandra and Lakshman, Hanuman and Sita Devi. There are so many places in South India. तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा में देखते हैं कि कितने प्रमुख स्थल में हमें श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी के मंदिर दिखाई देते हैं. It seems that Lord Ram was especially fond of South India. इससे ऐसा मुझे लगता है कि श्री रामचंद्र को दक्षिण भारत पसंद था. Lord Nrsingadeva also, he prefers South India. नरसिंह भगवान को भी दक्षिण भारत पसंद था. There are hundreds of Nrsinga temples in South India, hundreds of them. वहाँ पर भी कई सैकड़ों जो है नरसिंह भगवान के मंदिर है दक्षिण भारत में. And out of all those Nrsinga temples, a large percentage are self-manifested. और अधिकांश जितने भी नरसिंह भगवान के मंदिर हैं जो नरसिंह भगवान के विग्रह हैं वो स्वयं प्रकट होने वाले हैं. He likes caves. और उनको गुफाएं बड़ी पसंद हैं. Now, why would Lord Nrsingadeva like caves? तो क्यों नरसिंह भगवान को गुफाएं पसंद होंगी? आप बताइए. Why does Lord Nrsingadeva like caves? No clue? No clue? Okay, sir, why does Lord Nrsingadeva like caves? They are saying because lion likes caves. Lion likes caves. Haribol.
They're very simple. बहुत ही सरल उत्तर है कि क्योंकि जो सिंह है उसको गुफाएं अच्छी लगती हैं। Almost all the self-manifested Nrsimha deities in South India are in caves. अधिकांशतः जितने भी नरसिंह भगवान के विग्रह हैं वो अधिकांशतः आपको गुफाएं में मिलती हैं। They might be in small caves. They might be small caves or they might be large caves. कभी गुफाएं छोटी होंगी कभी बड़ी होंगी But caves they are. पर वो गुफाएं हैं। Sometimes the deity of Nrsimha, even though he's self-manifested, he didn't feel like coming all the way out of the rock. तो कभी-कभी जो नरसिंह भगवान के विग्रह हैं वो छोटे आकार के होते हैं और हालांकि वो स्वयं प्रकाशित हुए हैं लेकिन कभी-कभी पूर्ण रूप से पत्थर से बाहर। So sometimes part of his body is inside of the rock and only the rest is sticking out of the rock, but still he's self-manifested. तो कभी-कभी उनका आधा शरीर पत्थर के अंदर होगा आधा बाहर होगा लेकिन वो स्वयं तो विग्रह बने हैं किसी ने उनको बनाया। I've told this story before. मैंने कहानी पहले बताई हुई थी। I've told this story before that there's one very famous temple of Lord Sri Krishna. I don't remember the name. तो मैंने एक पहले कहानी बताई थी कि एक बहुत प्रसिद्ध नरसिंह भगवान का मंदिर है इसका नाम मुझे याद नहीं है। It's up on top of a mountain. और वो एक पर्वत के ऊपर है। That's another thing. Lord Sri Krishna likes to appear on top of mountains. और इससे भी पता चलता है नरसिंह भगवान को पर्वतों के शिला के ऊपर प्रकट होना अच्छा लगता है। He's the Lion King. Lion King. So why not? He likes tops of mountains, you know. Several of his temples, of several of these self-manifested deities, you have to go up more than 500 stairs, or maybe even as much as 1,000 stairs to reach the temple up high. और अधिकांशतः जो है मंदिरों के दर्शन करने के लिए हमें काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं कभी-कभी 500 सीढ़ियां भी चढ़नी पड़ती हैं तब हम पर्वत के ऊपर जाके मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं। So there's this one temple up on top of a mountain where there's self-manifested Nrsimha. और ऐसे ही एक मंदिर है जो कि पर्वत के बिल्कुल ऊंचे चोटी पे ऊपर है जहां पर नरसिंह भगवान And they say he's very fierce. और वो कहते हैं कि वो उग्र रूप में है। He's supposed to be Maha Ugra Nrsimha. तो वो ऐसा माना जाता है कि वो महा उग्र रूप में है। But you know, he doesn't look ugra to me, but that's just a personal thing. तो निजी रूप से मैंने उनको इस उग्र रूप में मैंने समझता हूँ कि इतने उग्र रूप में है मुझे ऐसा आभास होता है। He's a very special deity. और बहुत ही विशेष विग्रह है। He has a jaw that is about half a meter long. और उनका जो मुंह का जबड़ा है वो आधा मीटर चौड़ा है। And that jaw is open. और वो खुला है। So like, you can't really imitate it, but you know, the top of his mouth is shorter than the bottom. So the bottom of his jaw becomes a reservoir. It's half-meter long reservoir. He does this on purpose. तो उनका मुंह कुछ ऐसा है कि जो मुंह का ऊपर वाला भाग है वो छोटा है लेकिन नीचे वाला भाग काफी बड़ा चौड़ा आधा मीटर जितना है जिसके कारण जो है वो एक रेजर्वोयर का काम करता है। So he's a very hot deity. Hot deity. और उनका तापमान शरीर का तापमान गर्म रहता है। So if you're hot, you know, then you like to cool off with nice drinks. और अगर आपके शरीर में कुछ गर्मी है तो आप शरीर को ठंडक दे सकते हैं कुछ। So there's some special drink that he likes. I don't know what it's made out of. It's green color. It's herbs and maybe it has sugar cane. I don't know. It has different kinds of things. It's sweet tasting. और उनको जो है वो एक खासकर एक हरी रंग की ड्रिंक है जो कि उनको शरीर को ठंडा करती है वो उनको बहुत पसंद है वो अलग-अलग जड़ी बूटियों से बनी है वो। So you buy this special drink from the pujaris. There's a stand there that sells this special drink by the leader.
और वहाँ पर पुजारी रहते हैं जिनसे आप ये ट्रे खरीद सकते हैं, उन लीटर में लीटर आप जितना चाहें उसे खरीद सकते हैं. And then you take the jug of this amrita and you give it to the pujari, and the pujari, you don't get to put it direct into Lord Sringadev's mouth. The pujari puts it into the Sringadev's mouth. तो आप वो जल खरीद सकते हैं और फिर पुजारी को दे सकते हैं, और पुजारी जो है नरसिंह भगवान के मुख में अमृत जैसा जल डालते हैं. आप खुद नहीं डाल सकते, पुजारी ही डाल सकता है. Because he's Ugur Nrsinga, he's hot, so when you're hot you like the nice cool drinks. तो उग्र नरसिंह है, उसका शरीर का तापमान ज्यादा है और ऐसी स्थिति में आपको ठंडी करने वाली ड्रिंक अच्छी लगती है. So और हर रोज जो है कई सैकड़ों तीर्थयात्री वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं. So he drinks a lot of this beverage. और उनको ये ड्रिंक बहुत अच्छी लगती है और वो काफी इसको पीते हैं. I can't imitate how his jaw is sticking out. I can't imitate how it is, but I mean, the top of his mouth is like this and the bottom of his jaw is like this, if you can get an idea, you know. In other words, his bottom jaw is, you know, 3 times longer than the top jaw, and it's extended so it becomes a reservoir. तो ऐसा मुझे इसका नकल करना तो मुश्किल है, लेकिन मैं एक अंदाजे से बता सकता हूँ कि उनको जो जबड़ा है, मुंह का जो ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला भाग उससे 3 गुना बड़ा है, जिसमें जो है हम. So the pujaris pour 100 or 200 liters per day into Lord Sringadev's mouth, directly into his mouth. तकरीबन 200 लीटर वो जल हर रोज नरसिंह भगवान के मुख में वो पुजारी डालते हैं. It never overflows. और वो कभी पानी बाहर निकल के नहीं आता, वो सब वो ग्रहण करते हैं. He drinks it. और वो पी लेते हैं उसको. Now an atheist might argue maybe there's a crack in the back of the murti and it's going down the crack, and maybe if you look around, you know, maybe you'll find a small creek somewhere where it's going through the crack and, you know, coming out and some small stream somewhere. An atheist would argue it like that. ये बोलेगा कि मान निश्चित रूप से कहीं छेद होगा, कहीं नाली बनी होगी जिससे वो सारा जल जो है नाली के थ्रू से बाहर निकल जाता है. There is no such thing. लेकिन ऐसा कुछ नहीं. In other words, there's no, even if you were to circumambulate all the way around this temple and go below it and so forth, you know, you won't find a trace of some opening in the rock where the liquid is coming out. तो आप इस पूरी मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, और आप देखेंगे ढूंढने पर भी आपको ऐसा कोई छेद या ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जहाँ से ये जल जो है निकल जाता है. और So this means that he's drinking it. इसका मतलब ये है कि नरसिंह भगवान के विग्रह उस जल को पीते हैं. Nrsinga Bhagavan ki jai. So one time a fool, I've told this story before, but how many of you heard this story before? Most of the Vaishnavas, they haven't heard this story. It's an amazing story. One time a fool thought, well, I want to see how deep is the throat of this deity. तो मैंने कहानी पहले भी बताई है, निकाष्टा भक्त ने शायद इस कहानी को नहीं सुना है, लेकिन और कहानी है कि एक बार एक बुद्ध व्यक्ति ये देखना चाहता था कि नरसिंह भगवान का मुख कितना गहरा है. So he thought he would measure it with his arm, and just, you know, you want to know how deep some water is, you put your arm into it, and, you know, you're trying to figure out, is it 1-2 meters deep, how deep is it? और उसको लगा कि मैं हाथ डालकर ये देखूंगा कि उनका अंदर मुंह कितना गहरा है, 1-2 मीटर कितना है, और उसने ऐसे कोशिश किया कि नरसिंह भगवान की. So he put his arm, he thrust his arm deep into the throat of Lord Sringadev. He must have done it so quickly that pujaris couldn't stop him. और उसने क्या किया कि पूरा अपना हाथ बाजू जो है नरसिंह भगवान के मुख में डाल दिया, लेकिन उसने इतनी जल्दी किया कि पुजारियों को पता नहीं चला वो ऐसा कुछ कर रहा. So when he withdrew his arm, it wasn't there. और जब उसने लेके अपना हाथ बाहर निकाला तो देखा कि हाथ था ही नहीं. Lord Sringadev did not appreciate having this fool thrust his arm into his throat. क्योंकि नरसिंह भगवान को ये पसंद नहीं आया कि
उनके मुख पर किसी ने अपना हाथ डाल दिया। So Lord Nrsimhadev, I mean, remember he's Ugra and a singer, so this belongs to the house stupid can you get department. तो वो उग्र नरसिंह भगवान थे। तो I mean, we're supposed to be afraid of Ugra singer, you know, something. तो इससे ज़्यादा कोई मूर्ख और नहीं बन सकता कि उग्र नरसिंह भगवान के मुख पर उसने अपना हाथ। So when he thought he was going to pull his arm out, it was gone. Lord Nrsimhadev chopped it off. और जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो देखा कि उसका हाथ कटा हुआ था नरसिंह भगवान ने। Nrsimha Bhagavan ki jai. So one should not be a fool when dealing with the Supreme Personality of Godhead. So हमें बहुत ध्यान पूर्वक जो परम पुरुषोत्तम भगवान है उनसे व्यवहार करना चाहिए। So this is the glory of South India, that there are so many self-manifested deities. Of course, down at the southern tip of India, there is that temple with a self-manifested deity of Garbhodakashayi Vishnu. तो ये वास्तव में दक्षिण भारत की महिमा है कि वहाँ पर ऐसे आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जिसमें विग्रह जो है वो स्वयं प्रकाशित हैं, किसी ने उनको बनाया नहीं। दक्षिण भारत के कोने में आपको ऐसे ही एक क्षीरोदक्षा विष्णु के विग्रह भी मिलेंगे। Many years ago, hundreds or possibly thousands of years ago, there was a pious king down there. और हजारों साल पहले वहाँ पर एक पुण्यवादी राजा रहता था। And the Lord was very pleased with him. He was a great devotee of Lord Vishnu. और वो भगवान विष्णु के बहुत अच्छे भक्त थे और भगवान उससे बहुत प्रसन्न थे। And certainly Lord Vishnu was very pleased with him. और निश्चित रूप से भगवान उस राजा से बहुत ही प्रसन्न थे। So he self-manifested himself और फिर उसके कारण भगवान के सामने before the king. राजा के सामने प्रकट हो गए। Now I don't remember how many kilometers, but he was a giant deity. और मुझे नहीं पता कि कितने किलोमीटर लंबा है, लेकिन बहुत ही लंबा और बड़े विग्रह में रूप में प्रकट। He was, when I say giant, I mean he was giant. He was not an ordinary sized deity. और जब मैं कह रहा हूँ कि वो अर्थ विग्रह बहुत ही विशाल थे, तो वास्तव में बहुत विशाल थे। I don't remember the exact distance. मुझे उनका पूरा आकार वो उसका आकार। But his self-manifested body of this deity was somewhere around, it could have been as long as 30 kilometers. You heard me. तो उस विग्रह का जो आकार था वो कम से कम 30 किलोमीटर लंबा होगा। Anybody ever been there to this temple? कभी आप लोगों ने किसी मंदिर? So how many kilometers was it? Well, how many, the self-manifested deity, how many kilometers, do you remember? 36. 36? 36 kilometers? Haribol! 36 kilometers long. तो कदम बिहारी प्रभु वहाँ पर गए हैं और कह रहे हैं कि विग्रह 36 किलोमीटर लंबे थे। हरि बोल। But unfortunately for us, it's our misfortune actually. लेकिन हमारा दुर्भाग्य है। The king had you could call it a friendly relationship with Lord Vishnu. I'm sure he was in Aishvaya Bhava or formality, but still he was able to converse with the Lord. और उस राजा का बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध था भगवान के साथ, तो वहाँ से बात भी कर सकते थे। So he requested, my dear Lord, it's very wonderful that you have manifested before me. उन्होंने भगवान को कहा कि हे मेरे प्रभु, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। But at 36 kilometers, you're so huge, I can't serve you properly. लेकिन आपका आकार इतना बड़ा है 36 किलोमीटर कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता। So the merciful Lord, just to please his devotee, made himself smaller. नरसिंह भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने उस विग्रह का आकार छोटा कर। So the deity today is about the length of the distance between these two columns here. तो अब जो विग्रह का आकार है, जितना दूरी इन दो खंभों के बीच में है, उतना ही उस विग्रह का आकार। That's about 10 or 12 meters.
जो तकरीबन 10 से 12 मीटर होगा। Sound right? 10 or 12 meters. 10 से 12 मीटर के बीच में। He shrank down to that size. और वो 36 किलोमीटर से छोटे से आकार। He's still a large deity because they have made the altar in 3 sections. So in order to see the deity, you have to go between 3 altars. तो फिर भी वो विग्रह काफी बड़े हैं और उन्हें विग्रहों के बीच में 3 वेदी बनाए हैं जिसमें पूरे विग्रहों की अलग सेवा होती है। And actually Westerners are not allowed in this temple without the permission of the king. तो राजा की अनुमति के बिना वहाँ पर जो पाश्चात्य जगत की कोई भी भक्त हैं तो वो So दर्शन करने के लिए अनुमति नहीं है। when I went there, I had to have a letter. Somebody had to go and get a letter signed by the king so that I could enter the temple. जब मैं गया था तो किसी को वहाँ पर राजा से अनुमति लानी पड़ी ताकि मैं दर्शन करने के लिए मंदिर में जा सकूं। I think this is one of the temples that has the musical columns. Musical columns. Hello? Musical columns. तो ये मंदिर है जिसमें संगीत You don't know column. Pillars. तो संगीत में स्तंभ उस मंदिर में हमें मिलते हैं। So musical columns means that if you have a stick or something and you strike on the columns, they all have a different tone. So you could do a whole orchestra. If you had more than one person, you could play a whole melody on these columns. ये सब उसमें ऐसे हैं कि अगर आप किसी लकड़ी से उसको बजाएंगे तो खंभे के ऊपर अगर आप बजाएंगे तो खंभे में से आवाज निकलेगी। There's more than one temple like that in South India. जैसे एक से कई ज़्यादा मंदिर ऐसे हैं जिसमें हमें ऐसे स्तंभ मिलते हैं। There was a art and tradition in the days of yore. और ऐसा एक संस्कृति थी पुरातन काल में। There are several temples were constructed like that with these musical columns. ऐसे मंदिर जो हैं ऐसे स्तंभ के साथ बनाए गए हैं। So actually, it's a shame for us that the king asked the deity to shrink down. और हमारी शर्मनाक बात है एक तरीके से कि राजा ने भगवान के आकार को छोटा करने की प्रार्थना किया। Because in a modern world of atheism, the atheists and the scientists, they would not be able to explain this deity. If there were still a 36-kilometer deity there, the scientists would not be able to explain it. तो वास्तव में अगर ऐसा हो जाता कि वो विग्रहों का आकार छोटा नहीं होता तो जितने भी नास्तिक हैं ऐसे वैज्ञानिक हैं वो इतने बड़े 36 किलोमीटर के विग्रह कैसे बने उसको समझा नहीं पाते। All the geologists, they would probably get the best geologists from around the, they study rocks, geologists, तो ऐसे वैज्ञानिक जो कि पत्थरों की जो है वो विज्ञान को समझने and land formations, they study land formations. और जमीन के में कैसे विकार आते हैं उसको So if they had brought all the best geologists in the world would come to see that deity that was 36 kilometers long. तो उनको जियोलॉजिस्ट कहते हैं तो वो अगर ऐसे विग्रह होते तो पूरे विश्व भर से ऐसे वैज्ञानिक आते हैं उन विग्रहों को And all they could do is scratch their heads, I don't know. We can't explain it. It would be obvious that it couldn't have been man-made. There's just no way that it could have been man-made because they wouldn't even have a way of moving that much stone in those days. I mean, even now, with modern technology and huge cranes and all that, 36 kilometers of stone without separate pieces, not possible. Even if with the biggest cranes in the world, it would not be possible to do it. तो वो अपना सर बुझाते रहते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाते कि 36 किलोमीटर का एक विग्रह कैसे बनाया गया। ये तो निश्चित रूप से था कि कोई इंसान इसको नहीं बना सकता। आज के आधुनिक समाज में भी अपनी सब मशीनरी और सब अपने इक्विपमेंट्स के साथ भी वो इस नहीं बना सकते क्रेन के साथ भी। We'll stop there. ज़माने में हज़ारों साल पहले कैसे बन जाता? Anybody have any questions? किसी कोई प्रश्न है?
Jagaguru Sri Baba ki jai, Granchara Sri Caitanya Mahaprabhu ki jai.